Hello, dear viewers. Welcome to another episode of Investology. Uh, your support, your viewership has been phenomenal and very, very encouraging. We hope to continue to bring to you new and new guests talking about interesting topics to ensure that you don't miss any of our future episodes. Please make sure that you like, comment on this video. At the same time, please ensure that you subscribe to our channel. So we have a very, very interesting topic on our hands today. Taxation, tax filing, taxes, something that fills a lot of us with dread. We don't understand how it works. Everything feels difficult, cumbersome, complex. To demystify and to make all of these things a little more easier for all of us, we have a guest, a very interesting personality, a young entrepreneur, Abhishek Soni with us. Abhishek, welcome to the show. Thank you so much for the warm introduction, Abhilash. Absolutely, Abhishek. So Right. Abhishek is a CA by qualification. He's an entrepreneur by profession. He manages a very, very large team of CAs and tech technocrats. Uh, Tax2win, the company that Abhishek co-founded along with Vartika, uh, is one of the largest tax filing companies in the whole country. So much so that a few years back, Tax2win was adjudged one of the 25 emerging startups of Asia. Abhishek, in his previous roles before Tax2win, has worked with Ernst& Young and has worked in industries as wide-ranging as telecom, retail, manufacturing, to name a few. So, Abhishek, once again, welcome on board. And another interesting fact about Tax2win and Abhishek is, like I said, Tax2win was founded by Abhishek, Vartika, and Sishant. And Abhishek and Vartika are now husband and wife. So, Abhishek, how does it feel to have the same boss both at home and at work? So this is the question is something which is difficult to explain in words. मेरी शक्ल से अंदाजा लगा सकते हो. So Absolutely. and moreover, from business perspective, I believe having the same boss at घर and office दोनों जगह brings more outcome because you are always under pressure, so you always perform well. Absolutely. So you are being a good boy and giving the right answers. Yeah, Uh, that's correct. That's correct. uh, Super. So, Abhishek, one question before we get started. So, being a CA, how did you get started with Tax2win? What was the, inspiration? What was the opportunity that you saw? Uh, how did the whole idea of Tax2win come about? Yeah, so Abhilash, the entrepreneurship, the bug, मतलब बड़ा businessman बनना like Ratan Tata and all, it was there since my childhood. बचपन से मेरी इच्छा थी. I become like Mr. Ratan Tata is my idol. So that thing was there in my heart and soul and everything. So as you said that after completing my CA, I joined ENY in Gurgaon. So after working there in ENY, I got this idea कि a lot of people, especially the Uber cab drivers, they used to ask me कि they were aware that EY से निकला है तो ये CA ही होगा कोई, क्योंकि वहाँ सब CA काम करते हैं. So they were kind of well aware कि कोई CA ही है. So they used to ask कि सर आप हमारी return file कर दो, because at that time Uber Ola was like growing like crazy at that time. Lot of drivers were attaching, so lot of loans were required to be taken by those Ola Uber drivers. लोन के लिए क्या होता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होता है. इफ यू डोंट हैव योर टैक्स रिटर्न देन यू कांट अवेल द लोन. सो दे यूज्ड टू एनक्वायर कि सर हमारी रिटर्न फाइल कर दो. सीए के ऑफिस में जाते हैं, आधा दिन एक दिन लग जाता है, 2,000 रुपए लेता है, इतनी तो हमारे दिन की कमाई नहीं है. So they used to explain. Then the guest house that in which I used to live in. So the guest house guy was also like कि if you are CA, आप ही मेरी return भर दो, आप मेरे guest house में ही रहते हो. So from there, this thing came up.
कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का तो था ही कीड़ा शुरू से. सो ऐसे ही किसी एंटरप्रेन्योर्स को क्या होता है ना, ऐसी किसी एक्साइटिंग चीज की तलाश होती है कि क्या मिल जाए क्या मिल जाए क्या मिल जाए. सो ये मिल गया. मैंने कहा यार ये सही चीज है. देन आई काइंड ऑफ लुक्ड ऑनलाइन की क्या अभी लोग कैसे फाइल करते हैं, कितने लोग फाइल करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या मार्केट है, क्या मार्केट साइज है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी. So that time I realized only 3.5 crore people were filing income tax returns in India at that time, which is like only 2% of the entire population, as against 40% people in US who file taxes. So there I saw a huge opportunity कि यार खाली इंडिया जैसी कंट्री में 2-2.5-3 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं. तो अपने आप में अभी तक तो रिटर्न फाइल करना लोगों ने शुरू ही नहीं करा है. स्पेशली ई फाइलिंग भी उस टाइम लॉन्च हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था. सो ई फाइलिंग वाज आल्सो नॉट पॉपुलर. सो दैट वाज द फ्यूचर दैट पीपल विल बी ई फाइलिंग digitally, because few years back only people used to file paper returns. So all those things were abolished, and e-filing was launched by a department. So बस वहीं से click कर गया कि ये this is something where we can actually make a dent. And then I started Tax2win along with Vartika. So I left my job from there. So I used to go to audit. सुबह 6 बजे I used to reach in office. तो 6 से 9-10 के बीच में मैं अपना वो कर लेता था कि आइडिया पे वर्क करना शुरू कर देता था. एंड देन 10 से 6-7 आई यूज टू डू माई रूटीन जॉब वर्क. सो कुछ 1-2 महीने थोड़ा सा ग्राउंड अप से आई वर्क देयर. देन व्हेन आई गेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार अब इस पे वी कैन एक्चुअली टेक. सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. सो आई थॉट कि नाउ वी कैन टेक दैट रिस्क. So then I left my job from ENY. I came back to my hometown Jaipur, and then I discussed this idea with Vartika. So me and Vartika, we were in the same CA firm from where we did our internship or articleship. So we discussed. She also liked. Then we met Shishant. फिर करके then we thought कि यार इसको मतलब करते हैं. Then we started Tax2win. Then we kind of launched a small website. एक बार पहले स्टार्टिंग में फिजिकल कैंप्स लगाए, जैसे कंपनी में सीए बैठते हैं वैसे जाके हम लोग बैठे स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर. तो अलग अलग कंपनीज के ऑफिस में गेन फ्यू कस्टमर्स, लॉन्च वेबसाइट. then the idea got a strong response and a strong validation also कि people were actually coming and filing, because tax filing is something which is a need of everyone. लोगों को जरूरत होती है. So from then we added a few couple of more interns, like every startup does, क्योंकि वो सैलरी के पैसे होते नहीं है शुरू में किसी के पास. So we added a few जिनका सीए पास नहीं हो रहा था, हमने उनको बोला कि भाई तुम्हारी उम्मीद तो अभी ऐसे है नहीं जीवन में, तो स्टार्टअप को ज्वाइन कर लो, क्या पता कुछ उम्मीद ही जग जाए. So we added couple of guys like that because again the fund challenge was always there in a bootstrapped and initial startup. So then we added a few guys in our team. Then we launched website. Then we did the fundraise. Then eventually, it just taken off well. So that's Very how interesting. kind of yeah. Yeah, very interesting. I'm sure there was a lot of ups and downs in this journey. We'll see, time permits, we'll talk about some of those, but I'm sure it must not have been easy. And I wish you all the very best as you go forward as well. But now let's dig into the topic, tax filing, right? The last year, there has been a lot that is happening, a lot of changes when it comes to the tax filing regime and all that. Right. What are some of the things that our tax filers, our listeners, should keep in mind when they are filing taxes this year? So, Abhilash, this so in my entire experience of Tax2win of past 5-6 years, and then the CA experience, articleship experience, so पूरे 8-9 साल का experience मिला के, this has been a very dramatic year. From tax filing perspective, income tax has come with a new website. फिर वो वेबसाइट महीनों तक चली नहीं. फिर उन्होंने the all blame game happened online. Income tax department is tweeting कि इनकम इन्फोसिस को इतना टाइम दिया जा रहा है, दे नीड टू फाइल, दे नीड टू मेक द वेबसाइट अप एंड लाइव, and still the website is not working. And so a lot of drama is being, so old and new tax regime is also introduced the very same year. So I feel the current year is going to be very special for all tax filers. So there are a couple of things they need to take care while filing their income tax return. The first thing is that this year old and new tax regime has been introduced. So earlier conventional tax slabs जो थे वो तो है ही, उनके साथ में they have introduced new tax slabs also with a lower tax rates. So while filing your income tax return, you need to see
कि which regime is beneficial for you. Just to give you a very high level idea, कि ओल्ड रिजीम के अंदर आप जिस तरीके से अभी तक फाइल करते आए हैं, यू हैव योर इनकम, देन यू क्लेम डिडक्शंस, देन यू पे टैक्स एंड फाइल योर टैक्स रिटर्न. In the new tax regime, the tax rate is lower, but you cannot claim any deductions or anything. So you need to then evaluate that which will be more beneficial for you. So for a guy who is like earning 7-8 lakhs, who is not claiming any deduction, new tax regime would be beneficial for him, because given the tax rates are lower in new tax regime. But if a guy who is earning the same amount of 7-8 lakhs, but he invest in 80C, 80D, he has HRA to claim, ये सब वो claim करता है, then probably the old regime would be a beneficial regime for him. So the first and foremost thing you need to analyze is कि आपको कौन से regime के अंदर tax return अपना file करना है. That would So, be. Abhishek, let me stop you there. How does someone go and find if the old regime is good or bad? Where do they find this? Is this there on the Tax2win website? Yeah, so we have come up with a tax optimizer tool, which is a very, one of a kind tool, and you can say the innovation of tax filing history in India, which can let you decide quickly which tax regime would be beneficial for you, as well as what kind of tax saving you can do, what kind of tax optimization you can do. आप maximum अपना tax कैसे बचा सकते हैं, ये चीज आपको वो टूल बताएगा. I'll talk about that later part of our conversation also, how you can optimize your CTC. So yes, there is a tool which can help you decide कि आपको कौन सा regime beneficial रहेगा. Got that. Please go on. Please go on. Yeah. So this would be the first thing, Abhilash, कि इस साल लोगों को ध्यान रखना होगा while filing their income tax return. Apart from that, we are hearing a lot कि government pre-fill करके दे रहा है income tax return का data. So government has pre-populated lot of data from different sources, बैंक से, stock broker से, and आपके employer से, इन सब जगह से data को pre-populate करके आपका tax return में वहाँ पे show कर रहा है. But practically क्या हो रहा है that the data is not being pre-populated correctly on the income tax portal. When you go, आप खुद जाके वहाँ पे जब फाइल करते हो, and you will see कि वहाँ डेटा पूरा प्रॉपर नहीं आता है. So due to awareness, due to understanding issues, लोग उसको मिस कर जा रहे हैं. So it is very important कि जो डेटा वहाँ प्रीफिल करके डिपार्टमेंट शो कर रहा है आपको ऑन द इनकम टैक्स वेबसाइट, आप उसको देखें कि वो सारा सही प्रीफिल्ड है या नहीं है, सारा आ गया है या नहीं आ गया है, करेक्ट आ गया है या नहीं आ गया है. So all these 2-3 things you need to consider, that your pre-filled data has been pre-filled correctly or not. That is the second thing that you need to consider, because the portal is new, the issues are there. Still there are a lot of issues in that. Third thing I would say would be that you reconcile it with your form 26AS. राइट. सो फॉर्म 26AS क्या होता है, उसके अंदर आपका जितना भी इनकम का सोर्स और जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, एंड जितना आपने टैक्स पे करा है, ये सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक सिंगल फॉर्म के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड फॉर्म 26AS. सो बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, यू मस्ट इंश्योर कि आपके 26AS में जो आपका डेटा आ रहा है और जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न में डेटा आ रहा है, that data is reconciled, which is very important. If there is any discrepancy between these two data, the notice is certain to come to your mailbox. वो income tax आपको notice भेजेगा ही भेजेगा. Understood. So form 26AS, where do our tax filers get that form 26AS from? Yeah, so there is a very simple step. You can go to income tax website, you log in there, then there is an option view form 26AS, which is there. You click on that view form 26AS, and then you can download your form 26AS from there. Got it. So there you go, viewers. Yeah, form 26AS. Keep that in mind. Yes. Yeah, that is an important document. Yeah, मतलब फॉर्म 26AS एक तरीके से आपका आई वुड से कि बाइबल डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी. इनफैक्ट जीएसटी का, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपका जो जीएसटी का टर्नओवर है उसको भी उन्होंने वहां लिंक कर दिया है, तो उस टाइप की डिटेल तक वहां कैप्चर होगी. आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने ज्वेलरी खरीदी है, कोई टीसीएस कलेक्ट होता है, तो वो वहां पे अवेलेबल होगा. आपके एम्प्लॉयर ने जितना टीडीएस काटा है और किस अमाउंट पे टीडीएस काटा है, वो आपके 26AS में आपको दिखेगा. या और भी बैंक ने आपका कितना टीडीएस डिडक्ट करा है, कितना इंटरेस्ट इनकम बैंक ने शो करा है, वो आपको वहां शो होगा. सो दिस इज अ वन कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड यू नीड टू एंश्योर कि you refer to this document before you finally file your tax return. Or if you are so what we follow at our company, that for every client we file income tax return,
हम हर क्लाइंट का कंपलसरी फॉर्म 16 मैपिंग करते हैं. वी हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी एट द बैक एंड व्हिच entirely maps the with the form 26AS, because form 26AS से deviate हुआ, उधर notice आया. It's as simple as that. Very So it's an interesting. important document, yeah. And the Got that. fourth thing, Abhilash, which we need to consider is the form 16 जो employer आपको देता है. It is important कि form 16 में जो breakup है, that should reconcile with your income tax return, because there are a lot of cases that we practically experience in our clients कि उनके फॉर्म 16 के अंदर तो ब्रेकअप कुछ और होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उस टाइम कुछ और भर देते हैं, and then income tax department sends a notice that this is the deviation from your form 16. You give us the reason ki why there is such a deviation, and then you need to submit that reason with the income tax department. So this thing is also important that with you reconcile it your with form 16 also. And if you have multiple form 16 जहाँ पे आपने दो जगह जॉब करा है, then it should also match with both of your form 16. So these are the key 3-4 things that you need to consider this year before filing your income tax return. Noted. Got that, Abhishek. So, dear viewers, please keep all of these things in mind before you file your income taxes. These can prove to be very efficient, very important steps to ensure that there are no issues in the future. But Abhishek, let's go back a little bit. I think a lot of our viewers have this question in mind. The government website had some glitches, and it still has. There are some issues. So, what is going on here? Can you talk a little bit about that, and how does it affect our tax filers, our viewers? So as Abhilash has said, कि this year is going to be a dramatic year. Already it's going on. So there has been a lot of glitches in income tax website. So income tax ने नया अपना like GST, and they launched the income tax portal with a very refreshed design, and with a key aim to process refund of income tax faster, and with a key aim that processing of income tax returns happen quickly. What used to happen कि जो पहले वाला पोर्टल था उसमें एक तो रिफंड आने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न से वो बहुत टाइम धीरे धीरे प्रोसेस होती थी. इनकम टैक्स रिटर्न है बहुत स्लो प्रोसेस होती थी. सो दीज टू की चैलेंजेस वर देयर. लास्ट मोमेंट पे आके सर्वर डाउन हो जाता था, उनका रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होती थी. So given all this scenario, and plus as I said ki already the tax filing base in India has more than doubled from when it started in 2000, when we started in 2015. Currently 6-7 crore people are filing, and which is expected to go like 20-25 crore people. So obviously जो पोर्टल 2006 में इनकम टैक्स ने लॉन्च करा था, इट वाज नॉट अ सस्टेनेबल पोर्टल, एंड न्यू ऑब्वियसली अ न्यू टेक एंड एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड. सो गिवन ऑल दीज scenarios, they come up with a new income tax revamped portal, which is a very very good thing, and we really appreciate that income tax department has came up with such kind of initiative. But the launch has been a little bit थोड़ा सा वो हो गया, गड़बड़ हो गया उनसे, that they launched the portal, and first of all it didn't launch at all. They launched on 6 June. उसके बाद में वो 3-4 दिन तक तो काम ही नहीं करा बिल्कुल. Then there were a lot of glitches. People were not able to log in to their accounts. People were not able to file. Data was not getting pre-populated. वो चलते चलते बंद हो जा रहा है, उसमें बहुत सारा लैग आ रहा है, कभी पेज लोड हो रहा है तो वो लोड ही हो रहा है. Then it was full of glitches for couple of months. So I would say that कि लोग फाइल कर ही नहीं पा रहे थे tax return. But fortunately now the portal is comparatively stable. I would not say कि अभी एकदम सही हो गया, but yeah, comparatively it is stable from what it was like 7-8-10 days back. So the one thing that people need to ensure that as I mentioned कि ये जितना भी मैंने आप 3-4 points बताए, they need to ensure that these criteria are met out before filing their income tax return. And and in terms of how it has affected a common man कि वो फाइल कर ही नहीं पा रहे हैं honestly. 15 से 20 दिन पहले का मैं स्टैट्स लूं, इन इंडिया के अंदर अगस्त तक 5-6 करोड़ रिटर्न्स फाइल हो जाती थी. But until 15 days back, there was like 8-10 lakh returns, और अभी भी 30-40 लाख रिटर्न्स फाइल हुई है. So people were not able to file at all.
So my advice would be, as soon, so the due date is expected to be extended also, given the performance of the website, they should wait for a little bit the portal to get more stable, and once it's stable, they should check कि pre-populated सही से data सारा आ गया, and they can then file their income tax return. Understood. So I think it's a good time to take one of our audience questions. Abhinav was asking, sir, even if I haven't earned anything, should I file taxes? For example, let's take it this way, right? Even if I don't fall under the tax bracket or slab where I have to pay taxes, is it important that I pay taxes? What if I don't pay taxes? What are the benefits of paying taxes, even if I don't make any money? So no, I would say I would rather answer it in this way कि tax return file नहीं करने के कोई नुकसान नहीं है. So you must file your income tax return whether you are compulsorily required or not required. आप file करोगे, आपका कोई उसमें नुकसान नहीं है. It doesn't cost you anything. Tax filing, if you come on Tax2win platform, it's a complete free of cost. You don't need to, and it's a hardly, if you are not earning, then or you are earning like non-taxable income, you just come and within 4 to 5 minutes you can get your tax return filed, right? So there are no नुकसान of filing your income tax return, but file करने के फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है. I'll give you very practical examples, ठीक है. We have a couple of users, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरी पिछले 3 साल की फाइल कर दो, आज ही फाइल करके दे दो. बोले क्यों? बोले कि सर मेरे को बाइक लोन लेना है, जरूरी मेरे को मोटरसाइकिल खरीदनी है, आई नीड बाइक, तो आप फाइल कर दो. तो अब 3 साल की रिटर्न में आज कैसे फाइल कर दूं? आई कैन फाइल ओनली फॉर 1 year. या कोई आएगा कि सर मेरा होम लोन है, मेरे पास प्लॉट पड़ा है, मेरे को घर बनाना है, बट आई नीड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 years क्योंकि बैंक वाले 3 साल की रिटर्न मांग रहे हैं. तो अब मैं भाई आज कहाँ से दे दूं तुझे फाइल करके एक साथ, ठीक है. 2 साल से तू फाइल कर रहा होता तो यू वुड हैव योर 2 years रिटर्न विथ यू, एक इस साल का फाइल करते एंड यू कुड हैव टेकन दैट एडवांटेज. और इफ यू वांट टू हैव वीजा अप्लाई करना होता है, कुछ कंट्रीज में यू रिक्वायर योर टैक्स रिटर्न एज अ डॉक्यूमेंट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड एन इनकम टैक्स रिटर्न. तो नुकसान क्या है उसको रिटर्न को फाइल करने का? सो माय एडवाइस वुड बी, it doesn't cost you any time or it doesn't cost you any money. It hardly takes 4-5 minutes for those people who are saying कि जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है, जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो हम करें या नहीं करें. So आप लोग करो, you must file your tax return. It will take 4-5 minutes. It will be free of cost, but it has lot of benefits as I said. आज आपको 4-5 मिनट लगाना पड़ेगा, but you imagine I came across those people जो परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें. फिर वो सीए के पास जाते हैं, फिर वो बैलेंस शीट बनवाने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटेशन बनवाते हैं, बैंक वाले के चक्कर काटते हैं कि यार सर आप कैसे भी करके मेरी फाइल कर दो, कैसे भी करके फाइल कर दो. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड यू मस्ट फाइल योर टैक्स रिटर्न. इस पे तो कोई मतलब सवाल ही नहीं होना चाहिए. Absolutely, absolute no-brainer. Abhinav, I hope that answers your question. Uh, you know, tax filing is usually considered one of those topics where there is a lot of internal resistance, right? It's not very pleasurable activity. There's a lot of confusion, there is jargon. If, let's say, in simple language, you have to explain to our viewers, what are some of those best practices, what are some of those things that you could do on a everyday basis, right, throughout the year, so that when it comes to filing taxes, you are not like spending 2 days and breaking your head and pulling your hair out trying to gather documents from here and there. So what could be your advice on what are some of those best practices that everyone should do on a daily basis to ensure that tax filing is smooth and they have everything that they have that need to, and make sure that the whole experience is smooth? So the answer and the trick is very very simple, Abhilash, है ना. All you need is one folder in your desktop जिसका नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और उस फोल्डर के अंदर ईयर वाइज सब फोल्डर्स 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019. दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक. और फोल्डर के अंदर जो साल के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, योर फॉर्म 16, योर बैंक स्टेटमेंट, और इफ यू हैव यू आर ट्रांजैक्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और यू आर ट्रांजैक्टिंग इन कैपिटल गेन, कुछ खरीदा बेचा है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन वो सब एज एंड व्हेन हो तो वो उसके अंदर आप सेव करते रहो. At the end of the year, what kind of documents should the customers should our viewers save?
Let's say what kind of purchases, what all should they ensure that they save and keep so that they don't keep looking for it, when the time comes? Yeah, so if you are a salaried employee, you will be receiving your form 16. So Yeah. you have to keep your form 16 in that folder. Okay. You receive interest income, then you save your bank statement, so your interest income is shown at one place. Because a lot of people, I'll just pitch into a different thing in the middle of this question. Most of the people, बैंक से जो इंटरेस्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं. अभी तक ये चल रहा था, आगे नहीं चलेगा. आई विल रिपीट अगेन, इट वाज फाइन अंटिल नाउ, बट नाउ गोइंग ऑनवर्ड्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस कि आपको बैंक से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, सेविंग इंटरेस्ट इनकम स्पेशली. बिकॉज एफडी इंटरेस्ट पे तो क्या होना, बैंक टीडीएस डेडर कर देता है एंड गेट्स रिपोर्टेड इन योर 26 एएस. बट सेविंग्स वाले को पीपल इग्नोर कर देते थे. सो सेविंग्स इंटरेस्ट अगर आता है, यू मस्ट रिपोर्ट इट योर इन योर इनकम टैक्स रिटर्न, अदरवाइज अ नोटिस माइट कम गोइंग फॉरवर्ड. बिकॉज as I said, in the new portal data is also very tightly integrated. हर जगह से वो डेटा पिक करके और मैच करते हैं कि आपने क्या डेटा इनकम टैक्स रिटर्न में शो करा है. सो that thing is important. So yeah, coming back to the documentation part, बैंक स्टेटमेंट आप रखो. सैलरीड एम्प्लॉई हो तो आप अपना फॉर्म 16 रखो. फिर ईयर एंड होने पे आप अपना 26 एएस जो होता है उसको डाउनलोड करके यू कैन सेव इट. And then so these are the basic cases which will cover most of the people. Now आप अभिलाष की तरह हो जो म्यूचुअल फंड्स में मतलब इन्वेस्ट करते हो और लाखों रुपए कमा रहे हो, तो तो आपको जो आपका ब्रोकर स्टेटमेंट होता है, उस ब्रोकर स्टेटमेंट को, उस फाइनेंशियल ईयर के ब्रोकर स्टेटमेंट को आप सेव करके रखो. बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन और एनी अदर इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स. अगर आपने कोई लैंड को परचेज करा है या लैंड को आपने सेल करा है, स्पेशली लैंड सेल करा है तो कैपिटल गेन होता है. कुछ भी लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, फ्लैट और एनी कैपिटल एसेट, अगर इफ यू हैव सोल्ड दैट एनी एसेट, देन द परचेज एंड सेल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यू नीड टू कीप देम हैंडी विथ यू. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. जो क्या होता है कि सो प्रॉब्लम कहाँ होती है अभिलाष? द प्रॉब्लम इज कि मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है नेक्स्ट ईयर के जुलाई और अगस्त में. सो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस ईयर ओनली, कि मैं अभी रिटर्न तो फाइल करूंगा अभी सितंबर और अक्टूबर के अंदर इस साल, और मैं उस रिटर्न को फाइल करूंगा लास्ट ईयर के डेटा से, अप्रैल से लेके मार्च 21 तक की. ठीक है, मैंने जमीन बेची होगी फॉर एग्जांपल, या मैंने काम करा होगा कोई जुलाई और अगस्त में लास्ट ईयर. अब उस टाइम तो मेरे को सब ध्यान रहता है, एंड आई हैव मेमोरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन. बट आज अगर मैं उसको सेव नहीं करके रखता हूँ, तो आज मैं उसको ढूंढूंगा कि यार वो कहाँ गया, मैंने कितने में बेचा था, वो क्या क्या अमाउंट था, मेरे को कहाँ मिला था, वो स्कैन कॉपी कहाँ गई मेरी, वो फाइल में कहाँ रखा हुआ है. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि दैट्स व्हाई आई सेड द ट्रिक इज वेरी सिंपल. एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर सेव करके रख लो, जिस साल बेचा, जिस महीने बेचा, उसी महीने रख लो. And at the time of filing, just open that folder and you can start doing your taxes. So this is a very important thing. Got it, Abhishek. I think that will be very, very useful for all of our viewers. Now, see, the one question that would probably be in everyone's mind, right? How can I pay as low as taxes as possible, right? In essence, how can I, tax filing becomes a very, very significant and important part of anyone's personal finance, right? Right. Like everyone has to have life insurance, everyone has to invest, everyone has to file taxes also. With taxes, I think here is where your experience will come into picture. Uh, how can people save on taxes? How can people use some of the avenues that are legally available to ensure that they are paying as little taxes as possible, at the same time contributing to the economy or the country in some way or the other? How does it happen? What are the tricks for that? What are the avenues available for that? Yeah, Abhilash. So I'll answer it in this way कि टैक्स सेविंग करने के एसेंशियली 3 तरीके होते हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट you optimize your source at the source itself. When I say at the source itself, कि आपको जो सैलरी मिल रही है, आप उसी को इतना ऑप्टिमाइज करके लो
कि उस पे टैक्स आपको मिनिमम देना पड़े, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो, सो आई कवर दिस पार्ट इन द ब्रेक डाउन पार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज, इस जो आपका सैलरी मिल रही है उसको ऑप्टिमाइज करके लो। सेकेंड थिंग इज, यू इन्वेस्ट इन जो भी टैक्स सेविंग डिडक्शंस जितने भी मैक्सिमम आप अवेलेबल है और जितने आप ले सकते हो, यू अवेल ऑल दोस पॉसिबल डिडक्शंस। थर्ड थिंग इज, यू डू योर कंप्लायंस टाइमली, टाइम से रिटर्न फाइल करो, टाइम से एडवांस टैक्स अगर डिपॉजिट करना है, यू डिपॉजिट योर एडवांस टैक्स टाइमली। इफ देयर इज एनी टीडीएस डिडक्शन, देन यू गेट योर टीडीएस डिडक्शन डन इन अ टाइमली एंड इन अ बेटर वे। So these three are the key things. So first thing is you optimize your salary. So what happens is, whenever we receive a salary, like if your salary is like 1 lakh per month, 12 लाख रुपए आपकी salary है, so that salary has certain components का breakup, basic, HRA, DA, LTA. So in most of the cases we observe कि वो ही broken होता है, कि किसी के component में LTA नहीं है, किसी के component के अंदर HRA का component कम है, rent ज्यादा दे रहा है, राइट। तो किसी का कोई अलाउंस मिलना चाहिए, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इस टाइप के अलाउंसेस होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं कुछ कुछ, वो अलाउंसेस प्रॉपर नहीं होते। सो यू शुड स्पीक टू योर एम्प्लॉयर एंड देन यू शुड गेट योर टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज। सो आई विल शेयर दैट लिंक विद ऑल आवर व्यूअर्स। तो उसके ऊपर जाके आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है उसका ऑप्टिमम जो स्ट्रक्चर है, कि मैक्सिमम जो उसको बोलते हैं ना हिंदी में कि तेल निकाल लेना किसी चीज का, तो उस 12 लाख रुपए में तेल निकाल के आप कैसे आपका टैक्स को मिनिमम कर सकते हो, वो उस टूल के अंदर आपके पास अवेलेबल है। सो आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू अभिलाष एंड विथ ऑल द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग अस राइट नाउ। So this is one thing, you optimize your CTC structure. Second thing is you invest in tax saving deduction, ATC, ATD, lot of avenues are there. So जितने जो जहाँ जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, you invest in all those possible tax saving deductions that will help you in saving taxes. ठीक है। एटीसी एटीडी ये मोस्ट कॉमन है, आप सबको पता होते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दोज एटीसी एटीडी वाले डिडक्शंस के अंदर इंश्योरेंस एंड हाउसिंग लोन इंटरेस्ट एंड एवरीवन इज अवेयर। सो आई विल कवर ए फ्यू वन विच नॉर्मली लोग मिस आउट कर जाते हैं अपार्ट फ्रॉम एटीसी एटीडी। एटीडी के अंदर एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है which allows you to claim a deduction of up to rupees 5,000 for your preventive health checkup. So when I say preventive, जो अपन नॉर्मल सेरिडॉन, डिस्प्रिन, कोल्ड एंड कफ की जो दवाइयां लेने जाते हैं, या ऐसी प्रिवेंटिव अपन हेल्थ चेकअप डॉक्टर से करवाते हैं, सो गवर्नमेंट अलाउज अस टू टेक अ डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज 5,000 व्हिच मोस्ट पीपल मिस आउट। तो आप वहां पे 5,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। आपके घर में कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स है या डिसेबल पर्सन है, तो उनके ऊपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उस पर अप टू 1 लाख रुपीज तक का यू कैन क्लेम है डिडक्शन। सो दीज आर फ्यू डिडक्शंस। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, रेंट पेड है, तो एटीजीजी एक सेक्शन है जिसमें आप जो रेंट पे करते हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू डिडक्शंस दैट यू कैन क्लेम बियॉन्ड एटीसी एटीडी पॉपुलर डिडक्शंस। एक एनपीएस इज अ न्यू डिडक्शन विच लॉट ऑफ पीपल आर नाउ लीवरेजिंग आउट, कि आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करके यू कैन ऑल्सो सेव टैक्स विच इज एटीसी के बियॉन्ड है वो भी, that you can claim additional 50,000 of NPS beyond your 1,50,000 ATC deduction. So that is one place where you can invest and save tax for yourself. So second thing is broadly to invest is, so this thing is also there in our tax optimizer tool. वहां से आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, एटीसी एटीडी एटी जितने भी टाइप के डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं और अपनी सैलरी को अपना टैक्स आउटकम है उसको मिनिमम कर सकते हैं। सो दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज, एज आई सेड, यू फाइल योर टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। टाइम पे फाइल नहीं करोगे, यू माइट नीड टू पे अ पेनल्टी ऑफ अप टू 5,000। एडवांस टैक्स इफ इट इज एप्लीकेबल, इफ योर टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000, तो आपको एडवांस टैक्स देना होता है। सो इफ यू आर नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, देन यू माइट नीड टू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है। if somewhere you are getting an income जहाँ पे TDS deduct होना है, you need to ensure your PAN number is submitted with the other party, otherwise they will deduct a higher TDS of up to 20%. So that these things you need to consider to optimize your taxes. Got that, Abhishek. So, dear viewers, what we will do is, after this episode is over, in the YouTube video, in the comments, we'll pin a comment, the first comment, where all these documents, the links to these documents, and the tax optimizer tool, etc., will be there. So please feel free to come and check them out and make maximum utilization of that. Um,
So, a couple of comments from our viewers, Abhishek, is about I am living in another country. So, Raj Shah is saying I'm living in UK and I deal with stock market, and many people would be investing in mutual funds. So, how should people living outside, India, be looking at tax filing? Is it the same as an Indian residing in India, or is it different? Is there anything different that you would like to add there? Yeah, Abhilash. So, what happens in that case, it will be determined by your residential status, right? So, if you're residing out of India and you are an NRI, then only income which is, accrued or earned in India will be taxable. India से जो आप कमा रहे हो उस पे टैक्स तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है? And if you are just, residing there for some time and you are earning, but you are a resident of India, your residential status is resident, ठीक है? Then whatever income that you will earn इंडिया का तो है ही, ग्लोबली भी जो भी आप कमाओगे दैट विल बी टैक्सेबल. टैक्स फाइलिंग इंडिया से अगर इनकम हो रहा है तो फिर इंडिया से इनकम आप कुछ कमा रहे हो तो आपको वो तो टैक्स तो देना पड़ेगा. ये तो एक फंडामेंटल है, मतलब इंडिया से कुछ भी कमाना है तो टैक्स देना पड़ेगा. और उसका प्रोसेस तरीका वही सेम रहेगा, विच इज लाइक फॉर द वही इनकम टैक्स वेबसाइट पे यू नीड टू हैव अ पैन नंबर, देन यू गो टू इनकम टैक्स वेबसाइट एंड then get your tax return filed. Understood. Got that, Abhishek. Uh, Couple of points you made earlier, and I see a couple of questions around that as well. Uh, Advanced tax and refunds, right? The question is, where is it applicable to pay advanced tax, and where is it? How do you go about getting refunds? Does it happen automatically? Do you have to? So, can you talk a little bit about advanced tax and refunds? Sure, Bla. So advanced tax I'll cover for, it's quite simple. So if your tax payable is more than 10 lakh, then advanced tax is applicable. And there are certain installments, September, December, and March, on 25%, 50%, 70%. Some slabs are there which are, according to them, you need to pay your advanced tax. And if you are corporate, then there are four slabs, and the different slabs are there to get the advanced tax paid. सो एडवांस टैक्स प्रोविजन इज क्वाइट सिंपल. ठीक है, सैलरीड वाले केस में मोस्टली पता नहीं चलता क्योंकि उनका टीडीएस ही पहले डिडक्ट कर लेते हैं. सो दैट इज दे डोंट नीड टू एक्चुअली पे एडवांस टैक्स. वो टीडीएस इज लाइक एडवांस टैक्स ओनली इन अ लेमन लैंग्वेज. Understood. Got Yeah. it. Yeah. Coming to TDS refund or income tax return, which you mentioned. So income tax refund is very simple. It is the excess tax which is paid by you, जो कि आप बाद में as a refund claim कर लेते हो. ठीक है, it's quite simple. And how you can claim income tax refund? It is very simple. अपना income tax return भरो और अपना refund claim करो. Unless and until you file your tax return, you cannot get your income tax refund back. उसमें एक important step है. Lot of people file their income tax return, but they do not e-verify their income tax return. E-verify is like a second step authentication कि भाई मैंने ही ये रिटर्न भरी है, किसी और ने नहीं भर दी है. Because I might tomorrow hack your account, कहीं से पासवर्ड लेके और आपका रिटर्न भर दूंगा. So e-verification is like a second validation कि भाई मैंने ही भरी है, because it is validated through Aadhaar, OTP or through your net banking. So it kind of sort of confirms कि भाई जिसकी रिटर्न है उसी ने ही रिटर्न भरी है. So you have to file your income tax return, then you need to e-verify. Once you e-verify your return, usually in earlier mechanism on an average 15 दिन से 1 डेढ़ महीने में आपका income tax refund आ जाता था. Now with the new portal, the government is claiming कि it will kind of process real time. नहीं तो 1-2 दिन के अंदर आपका income tax refund आ जाएगा. Understood. Got that. Abhishek, a lot of our viewers today are investors. They invest in mutual funds, they invest in stocks. Mm-hmm. Talk a little bit about long-term capital gains tax and short-term capital gains tax. What are some of the things that every investor who invests in capital markets or any other place that attracts capital gains tax should keep in mind? So yeah, Abhilash. So lot of investors are right now investing in mutual funds. जैसे Finity में भी बहुत लोग हैं जो mutual funds के अंदर invest करते हैं. So there are two kind of so mutual fund से income या tax जो देना होता है वो देना होता है capital gains पे या dividend income पे. ठीक है, dividend income is tax as per your slabs. Coming to the capital gain chapter, which is more interesting, and lot of people are affected by the capital gain thing.
सो कैपिटल गेन के अंदर होते हैं दो तरीके के कैपिटल गेन्स. One is long term, one is short term. If you have sold within 1 year, then it will be considered as a short term capital gain. एक साल रख के एक साल से ज्यादा टाइम में आपने बेचा है तो it will be a long term capital gain. For example, मैंने अप्रैल 2020 में कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, उसको मैंने 6 महीने 9 महीने 11 महीने या फॉर दैट मैटर मार्च 31 मार्च को ही बेच दिया, तो इट विल बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर उसको मैंने एक साल रख के एक साल से बाद में बेचा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Understood. Yeah. So how the taxation is done in case of mutual fund, if it's a long term capital gain and it's a equity oriented mutual fund, ठीक है, then it up to 1 lakh तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है. अब 1 लाख से ऊपर यू नीड टू पे 10% एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. और अदर देन इक्विटी कोई म्यूचुअल फंड है लाइक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, तो देन यू नीड टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 20%. ठीक है. या सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है तो उस पे 10% कैपिटल गेन है. 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 1 लाख तक एग्जम्प्ट है. और अदर देन इक्विटी है तो इसके ऊपर यू नीड टू पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. And if it is a short term capital gain, then you need to pay 15% short term capital gain on that if it is an equity oriented mutual fund. और अगर other than equity oriented mutual fund debt mutual fund है तो उस पे जो आपका normal tax slab होता है उसके हिसाब से आपको tax देना है. Yes. And yeah, it is very important to note that the taxes are paid only on the gains, the profits that are made. Yeah, the fundamental condition is that there has to be gain obviously. Yeah. कोई भी gain होगा तो उस पे आपको tax देना होगा. Correct. Yeah, an important aspect I would like to bring forward to all our users on the Finity app. Whenever you invest in mutual funds, you can download your short-term and long-term capital gain tax ka statements in one click. Okay, and all you need to do is just use that to file your taxes. It is as simple as that. Abhishek, I think we are coming towards the end of our session. As parting comments, what would you say to our users and how can they go about filing taxes on Tax2win? Yeah. So sure. So I'll just quickly start with filing taxes with Tax2win. It's super easy. अभी login करके और अभी you can start filing your taxes. There is no brainer. कुछ नहीं करना है. आप you just go on the website, just sign up. If you want to do it on your own, you upload your form 16. All your details will get pre-populated. You don't need to fill the data also. सब उसके अंदर ऑटोमेटिक भर जाएगा. जो भी लगे भरना है, जहाँ पे एडिट करना है खुद से एडिट करो and then just click file my return button and your return will get filed. As simple as that. As simple as that. There is no, as I said, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मतलब. And if what if some there is some mistake, something happens while I'm filing it myself, will Tax2win support with, so at each field we have a tooltip which will guide you कि क्या वहाँ पे भरना है, कहाँ से देखना है, क्या भरना है. We have a chat support from where we have a service support mail ID where you can drop your query. We will guide you. You can call us, वहाँ support करेंगे. And the most interesting thing is that कुछ गलत इनपुट डाला है then our software will itself stop you right there only कि आपने गलत डाला है तो वहीं पे दिखा देगा कि आपने सही नहीं डाला है. You need to fill it correctly. Obviously income figures and all तो आपको ही बताने पड़ेंगे because you only know that. But yes, if you made any mistake which is like कुछ आपने गलत input दे दिया या जो input नहीं देना है वो दे दिया या कुछ amount 1 लाख की जगह 10 लाख डाल दिया, नहीं बनना चाहिए था, वो आपको सब शो जाता है. And we have a very beautiful computation and process designed in place. सारा डिटेल भर के there is a PDF file which gets generated. उस PDF फाइल में आपको सब कुछ दिख जाता है कि आपने क्या क्या डिटेल भरा है और क्या क्या आपका टैक्स कंप्यूटेशन है. You feel free to thoroughly study that PDF फाइल. वो सही लगे बटन दबाओ, नहीं लगे तो वापस पीछे जर्नी में जाओ, एडिट करो और वापस से फाइल बटन दबाओ. It's as simple as that. और इतना सरदर्दी नहीं लेना है. You just need to spend a very small amount of money, 400-500 rupees, and our experts at the backend will do it for you. So it's as simple as that, filing your income tax return.
So, and the So, second part, Abhilash, is that f- one of the key takeaway that I would like to give all hundreds of people, our esteemed users, जो लोग हमें देख रहे हैं, that don't go for the the time is changing very rapidly. How we used to invest, हम लोग कैसे इन्वेस्ट करते थे, हम कैसे डिडक्शंस को क्लेम करते थे, मतलब वो इंश्योरेंस का और वो सबका मतलब टाइम गया. We need to look forward for टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहाँ पे सिर्फ 80C में इन्वेस्टमेंट का फोकस नहीं हो, जहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट से हम क्या रिटर्न कमा रहे हैं उस पर भी फोकस हो. सो आई वुड एनकरेज ऑल पीपल कि खाली उसमें मत करो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक ले लिया और 80C का कोटा हो गया. मोस्ट पीपल आज भी, ज्यादातर लोग बस 80C में मेरे को इतना कोटा पूरा करना है, मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, मैं ये कर लेता हूँ. दैट्स द काइंड ऑफ चेन हैपन. अभी आज भी वैसे ही होता है. सो गो फॉर ELSS म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपका टैक्स सेविंग भी हो रहा है, और टैक्स सेविंग के साथ में आपको 15%, 20%, 25% तक आपको एनुअल कई बार रिटर्न मिल जाता है. सो लुक फॉर दोज ऑप्शंस, एंड all these options are very beautifully through the robots of Finity. वहां पे आपको दिखा देंगे कि आपको कौन से वाले के अंदर करना है. अगर आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे जाना है, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. आपको मॉडरेट चाहिए, वो भी अवेलेबल है. आपको लो रिस्क वाला चाहिए, वो भी अवेलेबल है. But go for these kind of options. These are very beneficial for the taxpayers. absolutely. And there are a lot of questions that I'm seeing on the comment section, Abhishek, and we were not able to answer all those questions. But dear viewers, my request is please put those questions as comments on the YouTube video, and we will ensure that Abhishek personally answers to all those questions and your doubts will be cleared. Uh, and if you have not filed your taxes yet, please open your Finity app. There is a free tax filing section where you can file your taxes. And the other thing is, if you don't want to file it yourself, you can always hire a ECA, a remote CA from Tax2win to file your taxes at a fraction of the cost that you will pay a CA in your town wherever you live. So please make use of this opportunity. And Abhishek, thank you so much So, for Abhilash, before we wrap up, there are few, small questions are there who have written 2-3 times. So I would just like to please. take up for them. So, Nitin Chaudhary has asked, a personal loan interest can exempt of income tax, likewise home loan. नहीं नितिन, जो पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका हमें डिडक्शन नहीं मिलता है. सो वो नहीं मिलेगा. वी कैन ओनली क्लेम फॉर द होम लोन. इनफैक्ट कार लोन का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओनली होम लोन डिडक्शन इज अलाउड. ठीक है. तरुण मोदान, आई यूज्ड टू फाइल ITR थ्रू Tax2win since 2 years. ग्रेट एक्सपीरियंस. आई यूज्ड टू से ग्रेट सर्विस कस्टमर केयर. थैंक यू तरुण. आपका एप्रिसिएशन रियली मोटिवेट्स अस टू स्ट्रेच मोर. तो थैंक यू सो मच. Then I'm filing. So Praghal Bhatt is asking, will I get any notice? How I respond? LTC amount not mentioned in Form 16. Due to I was late buying ICICI policy as one time LTC window given by government with GST 12. Can I claim this LTC while filing ITR? Will I get any notice? So Pragal, but you can mail. The query is 100% not clear because there are a lot of conditions and if and but is there. So you can mail us on support@tax2win. I will just put it in the comment section, or Abhilash, if you can, would be really great. Put support@tax2win. आप इस क्वेरी को वहां भेज दीजिए. Then we will understand few more details from you, and then we will guide you further definitely in this. Amit Kumar is asking that is there tax slab from short term capital gain? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई अलग से टैक्स स्लैब नहीं है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख, उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होते हैं. सो देयर इज नो सेपरेट टैक्स स्लैब्स फॉर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. दे आर नॉर्मल टैक्स स्लैब्स. अरविंद कुमार, फॉर्म भरे 40-50 डेज हो गए, अभी तक कोई वेरिफिकेशन फोन नहीं आया है. सो अरुण, आप भी support@tax2win पे अपना मेल कर दीजिए. वी विल गेट इट चेक कि किस चीज के लिए आपको कॉल की जरूरत है.
Can I see, Pramod Gupta is asking, can I see and listen to this YouTube discussion later? If yes, then how? Please explain. From Pramod Gupta. बिल्कुल प्रमोद जी, we will host this live. आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजिए. We will be more than happy, to make it live and make it available for you. So Umesh Pramod, Kumar. the video will be available on our YouTube channel right after this session is over. And dear viewers, maybe Abhishek will take a couple of more questions. But if there are any more questions, please go and comment in the comment section on the video once this session is over. And we will ensure that Abhishek will answer those questions. Abhishek, maybe you can take 2 or 3 more questions in the interest of time, and we can wrap up this session. I have a very, very important announcement to make as well about one of a very key and important projects that we are launching in Finity right after Abhishek takes these 2 questions. Sure, Abhilash. Yeah. So I'm just browsing through. If you're doing so, So I'll just this is take. one question that came a couple of times. What is TCS in ITR? So, TCS is like TDS का opposite TCS है. TDS is like payment करते time हम TDS काटते हैं. So that is tax deducted at source. So TCS is like tax collected at source. कि जब हम payment हो रहा था हम उस time purchaser से additional collect करते हैं TCS. Understood. Got that. Yeah. Yeah. Uh, So that is applicable only in few cases like gold की purchase के अंदर उन्होंने TDS introduce करा है, TCS करा है. कार purchase करते हैं तो I think उसके अंदर भी करा है. So there are few changes happened in the TCS provisions. But essentially it is a tax collection at source, just like tax deduction at source. Understood. Cool, Abhishek. So I think I'm Great. done with questions, Abhilash. So you Perfect. Dear can. viewers, once again, I request you to put all your questions in the comment section and Abhishek will answer them personally. I have a very, very important announcement to make. At Finity, we are launching our stock investing and trading platform very, very soon. The early access waitlist is now available. Please go and register yourself. You just need to give your name, email ID, and mobile number. With this, you get multiple benefits. So, only for this limited period, early access waitlist users, for the first 3 months of after the product is launched, there is absolutely no brokerage, zero brokerage for unlimited trades. And for the first 1 year, there is no account maintenance fee or account maintenance charge, and there is no account opening fee, right? So this is only for the early access waitlist users. The link is right now there in your comments that you're seeing. So please make sure that you sign up right now and do share it with your friends as well. This is a once in a lifetime offer. And coming back, Abhishek, thank you so much for your time and going Thank you. by the questions and the engagement in the comment section. Looks like people really found it very, very engaging and informational. And Abhishek, if people were to reach you or the organization, where should they write to? What is the email ID? Is there a common email ID that they could write to? Yeah, they can write to support@tax2win.in, support@tax2win.in. I will mention that in comment also. Yeah, please do that. Dear viewers, thank you so much, as usual, for your time, for your patience, for your attention. Please, to ensure that you don't miss any such sessions in the future, ensure that you like this video, comment in the video, and subscribe. We are trying to create a repository of knowledge through this Finity YouTube channel. All your support, like subscribing, etc., will help us a lot in reaching more people. Please share this video with as many people as possible. Thank you once again, and looking forward to the next session. Until then, thank you. Goodbye. Have a good day. Thank you, Abhishek. Thank you, Abhilash. Thank you, everyone.